pecuniary jurisdiction. Pecuniary jurisdiction also, you have to, when you decide on where you want to bring the suit, you will have to see whether that court has pecuniary limits to try the case. If an ADJ is also empowered to try a case of, say, 20,000 rupees, a recovery suit, and the civil judge is also empowered, and the High Court is also empowered, then you can sue only in the court of the civil judge, because that is the lowest grade competent court. Now, what happens with arbitration cases? Are you aware of, because this question is also sometimes asked, that suppose there's a Section 34 petition. Are you aware of what is Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act? Okay. If there's an arbitrator, he's passed an award, and so he's given a decree, say for ₹1 lakh a recovery order, he has passed an award. It can be challenged under Section 34 of the Arbitration Act, and it can be challenged not before a civil judge, but before a district judge and also before the High Court. Then how do you decide? The same rules of pecuniary jurisdiction apply, but there is slight difference between what you do in a civil suit and what you do in a Section 34 petition, which is why it becomes a trick question, which is why they ask this in the examination. Because when you file a civil suit, you take into account only the amount that you have claimed initially and pre-litigation interest. That is your suit value. Pecuniary, how do you decide pecuniary jurisdiction? Based on what I have claimed. Okay, so if I sue somebody for saying that, oh, you owe me ₹1 lakh because you had taken ₹1 lakh from me 2 years back, and from those 2 years back till today, when I'm instituting the suit, I have again been entitled to ₹20,000 more. Plus, I will ask for pendental interest. Plus, I'll ask for future interest. So, what is out of this? What will be determinative of pecuniary jurisdiction? Anybody? Yeah, so it was ₹1 lakh, which was somebody had taken from me, that, and I have claimed interest. So that 20,000, will that be added? Yes, that will be added. Then I will say that pendental interest also I am claiming. Will that be added? It will not be added. Future interest, again, it will not be added. Okay, but the court can award that. Now, how it happens with arbitration is different. There, the initial sum claimed, plus the pre-litigation interest, plus the pendental interest. Only the future interest is not added. Are you getting me? So that becomes determinative of pecuniary. So, sir, it is the discretion of the court. You see, it is a discretion, but not absolute discretion. And CPC provides that how that discretion has to be exercised. So, for instance, in a commercial dispute, you can give contractual rate of interest. If I and X enter into a commercial contract, and it says that in the event of my default, I will have to pay interest at 18% or even 24% interest, then courts are empowered to grant that, provided that there has some sanctity. For example, there are customs, there are trade practices which can support my claim for even 24%. Courts have given. Not only arbitrators, even civil courts have given. But you will have to establish that to that extent. Okay. So ordinarily, courts give only 9% and 6% future interest, because it also depends on what the bank rate of interest is. You must be aware of prime lending rate, and there are different bank rates. They keep on changing from time to time. That will also have to be taken into account by granting pendental interest or future interest. And at the same time, the contractual rate of interest will be taken into account, trade and practices will be taken. How we will express in our claims or written statement these things what you have stated? So if you are claiming, suppose you have to draft a plaint, your interest is aligned with the interest of the plaintiff. So you will say that this is my claim of my contractual amount. Then this is the amount which, for instance, you will support it. Your claim for pre-litigation interest, usually people support it with issuance of legal notice. If I have issued a legal notice to X person, suppose there is no contractual rate,
Sometimes the contract itself provides that in the event of a default, the person who is in default will pay interest at an X rate. So you will say that because my contract provided that in the event of default I will get say 18% or 12% interest, therefore I am claiming that interest. Sometimes it is not provided. There I may have issued notice to a person that here you have to pay me this amount. If you are not going to pay me, you will pay me interest at 18%. So I will say in my plea that even though the contract did not provide, but I served him this notice, and in the notice, this is what I had stated. And because the notice was served, he knew that in the event of he not paying, he will have to pay me this rate of interest. So you will say that in the plate and you will justify it. Then again, the same, because once you are able to establish pre-litigation, the same will continue. I will claim it on the basis of the same rate of interest, even at pendental item, even at future. Now it is left for the court to decide. Please, ma'am. So coming back to the draft I have shared with you, I told you on last date also, value of the suit for purpose of court fees is to be given and jurisdiction is also to be given. Am I audible? So coming back to वैल्यू ऑफ द सूट किस तरीके से होगा, जो भी आपको आशीष ने बताया, ठीक है, कितना रुपया आप क्लेम कर रहे हो, उस पर कोर्ट फीस कितनी लगेगी, वो दोनों चीजें आप पे कर चुके हो, आप उसमें लिखोगे. नेक्स्ट इज प्रेयर. जो आपकी प्रेयर है वो आप लिखोगे. पास द डिक्री फॉर रुपीज दिस, अवॉर्ड पेंडेंटे लाइट एंड फ्यूचर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ दिस ऑन द अबव स्टेटेड अमाउंट, वही जो अभी आप लोगों ने सुना. फिर अवॉर्ड कॉस्ट, कोर्ट ग्रांट करती है या नहीं करती है, पर जो आप नहीं मांगोगे वो कोर्ट नहीं देगी. इफ यू रिमेम्बर, जब हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, मैंने आपसे बताया था कि एक केस, एक ही कॉज ऑफ एक्शन से जितने भी रिलीज आ रहे हैं, आपको वो सारे क्लेम करने पड़ेंगे. अगर आप नहीं क्लेम करोगे तो आप एक अलग से केस फाइल करोगे. एंड पास सच अदर एंड फर्दर ऑर्डर्स एज मे बी डीम्ड फिट. मान लो कि आपने, पहली बात तो ये, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था दैट यू हैव टू प्लीड फैक्ट्स, नॉट लॉ एंड नॉट द जजमेंट्स यू आर रिलाइंग अपॉन. केस लॉ नहीं लिखना आपने. मान लो कि आपने कोई गलत प्रोविजन लिख दी. आपने लिखना था एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39(192) CPC फॉर टेम्परेरी इंजंक्शन. आपने गलती से ऑर्डर 39 ना लिख के 37 लिख दिया. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोर्ट आपकी पूरी प्लेंट को पढ़ के कोर्ट को पता है कि आपने कौन सा रिलीफ मांगा है. तो सिर्फ इसलिए क्योंकि गलत प्रोविजन साइट हो गया डज नॉट मीन कि आपको वो रिलीफ नहीं मिलेगा. सिर्फ ऑर्डर 37 का सूट है जिसमें जरूरी है कि अगर आपने ऑर्डर 37 का सूट फाइल किया तो आपको लिखना पड़ेगा सूट में ऑर्डर 37. ठीक है. देन पिछली बार मैंने आपको बताया था वेरिफिकेशन जरूरी है, एफिडेविट होना जरूरी है. तो मैंने ऐसे आपके साथ एक रफ सा ड्राफ्ट शेयर किया है, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ऐसे ही एक रिटन स्टेटमेंट देख लेते हैं, बाकी आप अपने आप पढ़ लेना. ट्राई करते हैं. आशीष बता सकते हो कैसे लगेगा? आ रही आवाज आ रही है ना, वो बोल. चलेगा चलेगा. ये फिर लगेगा मैम. ओके, ये लॉजिक है ना. ठीक है, थैंक यू. हाँ, ठीक है. So now coming to our model draft for written statement. Again,
वही सेम in the court of the suit number, same description which is given on the plaintiff given in the written statement also, so that the two can be related. Written statement on behalf of defendant, then defendant submits. Now these are the objections. Last time भी मैंने आपको बताया था कि आप कुछ preliminary objections ले सकते हो, कुछ preliminary submissions दे सकते हो, उसके बाद आप reply on merits देते हो. तो preliminary objections क्या क्या हो सकती है? कोर्ट फीस कम दी है, barred by limitation है, इस कोर्ट की jurisdiction ही नहीं है, ठीक है. जो 5 या 8 क्या डिफेंसेस हो सकते हो, मैंने सारे इसमें लिखे हैं. आपको सारे के सारे डिफेंसेस नहीं लेने, जो आपको लगेगा कि आपके केस में फिट करेंगे वो लेने हैं, ठीक है. जैसे कि सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, अंडर आर्टिकल लिमिटेशन एक्ट में सेक्शंस दे रखे हैं, बाद में उसके आर्टिकल्स दे रखे हैं. तो अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द लिमिटेशन एक्ट एंड इज लायबल टू बी डिस्मिस्ड ऑन दिस शॉर्ट ग्राउंड अलोन. This honorable court has no jurisdiction to entertain and try the suit because जो भी आपको लगता है wrong बनेगा. That this suit has not been properly valued for the purpose of court fees and jurisdiction and is therefore liable to be rejected outrightly. That there is absolutely no cause of action in favor of plaintiff and against the defendant. ये सारे के सारे वो ग्राउंड है जो आपके डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ योर केस आप ले सकते हो, कौन कौन सा ले सकते हो, ठीक है. जैसे मान लो कि मैंने कहा कि मुझसे मिस्टर ए ने लोन लिया था, रिटर्न नहीं किया, और बी जो था वो गारंटर था, तो मैं बी को स्यू करती हूँ, लेकिन जिसने लोन लिया उसको स्यू नहीं करती. मैंने केस फाइल किया कि मैंने मिस्टर ए को लोन दिया था और बी गारंटर था. जब मैंने केस फाइल किया तो मैंने बी को तो इम्प्लीट किया एज डिफेंडेंट, पर ए को नहीं किया जिसको मैंने एक्चुअली लोन दे रखा है. तो जब गारंटर है वो ये कह सकता है कि दिस सूट इज बैड फॉर नॉन जॉइंटर ऑफ पार्टीज. शी शुड हैव जॉइंड इवन द प्रिंसिपल बोरोवर एज अ पार्टी. वो सस्टेनेबल है या नहीं है वो मैं नहीं देखती, वो ठीक है कि नहीं है वो भी नहीं कंसिडर कर रही हूँ. मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि रिटन स्टेटमेंट में वो डिफेंसेस आपको लेने पड़ेंगे. कुछ भी जो आप लीड करते हो आप एविडेंस उसी पे लीड कर सकते हो, कुछ भी जो आप प्रे करते हो आपको कोर्ट वही देगी, उसके बियॉन्ड नहीं देगी. लेकिन ऐसे ही रिटन स्टेटमेंट में भी है, जो आप यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाओगे वही ऑब्जेक्शन आखिर तक केस में चलेगा, ठीक है. अब जैसे मैंने प्रिंसिपल बोरोवर के खिलाफ ही केस फाइल किया, तो प्रिंसिपल बोरोवर कैन नॉट से दैट इट इज सूट बैड फॉर नॉन जॉइंटर ऑफ पार्टी. पर जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैंने गारंटर को तो स्यू किया लेकिन बोरोवर को नहीं किया, तो गारंटर को अगर मैं स्यू करती हूँ तो वो सस्टेनेबल हो जाएगा, वो सॉरी ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है कि मेरे को तो इन्होंने स्यू किया लेकिन नॉन जॉइंटर ऑफ पार्टी की ऐसे बैड है सूट, क्योंकि बोरोवर को नहीं किया, बोरोवर को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, ठीक है. जुरिस्डिक्शन का कैसे होगा? मैंने बोला कि मैं साकेत में रहती हूँ, साकेत में हमने एग्रीमेंट साइन किया, साकेत में उसने मेरा फर्नीचर बनाया, साकेत में चेक इश्यू हुआ, पर मैं केस फाइल कर दी रोहिणी में, तो वो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का बाहर आ जाएगा, ठीक है. जुरिस्डिक्शन का जो बाहर आता है उसमें ऑब्जेक्शन हैज टू बी टेकन ऑन द वेरी फर्स्ट स्टेज, अनलेस कि वो सब्जेक्ट मैटर का है. सब्जेक्ट मैटर का है तो अलग बात है, अदरवाइज अगर आप सीपीसी पढ़ोगे तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या पिक्यूलियर जुरिस्डिक्शन का जो ऑब्जेक्शन है इट हैज टू बी टेकन एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी. और अगर नहीं लिया तो अगर बहुत ही हार्डशिप हो रही है तो आप ले सकते हैं. ऐसी सूट इज बैड फॉर मिसजॉइंडर. Another could be suit is barred by the decree dated this. जैसे एक क्लेम था, मैंने मिस्टर ए के खिलाफ केस फाइल किया कि इसने मेरी ये चीज रिटर्न करनी है, मेरी ज्वेलरी रिटर्न करनी है, मैंने इसके पास छोड़ी थी ऐसा फॉर रिपेयर वर्क, अब ये रिटर्न नहीं कर रहा, और उस पर ऑलरेडी मैं केस फाइल कर चुकी हूँ और मैं हार चुकी हूँ. अब मैं दोबारा केस फाइल करूंगी तो उसमें जुडिकेटा का भी आएगा डिफेंस. तो हम अगेन सेइंग कि ये सारे सिर्फ डिफेंसेस है, कौन सा आपको हेल्प करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा कि आपको एग्जाम में क्या है. Similarly, suit is liable to be stayed. हस्बैंड ने केस फाइल कर रखा है डिवोर्स का ऑन द ग्राउंड ऑफ की वाइफ क्रूएल है, वाइफ केस फाइल कर देती है ऑन सम अदर ग्राउंड, तो हस्बैंड कह सकता है कि मेरा केस पहले चल रहा है इसलिए या तो इस केस को यहाँ ट्रांसफर कर दो या स्टे कर दो उस केस को.
तो सेक्शन 10 जो आप लोगों ने सीपीसी में पढ़ रखा है उसकी ऑब्जेक्शन आ सकती है। सूट हैज नॉट बीन प्रॉपर्ली वेरीफाइड इन अकॉर्डेंस विद लॉ। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी वेरिफिकेशन क्लॉज होना जरूरी है। Plaintiff suit is barred by section 41H। 41H क्या कहता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, कि अगर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कब केस फाइल करते हो? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ा हुआ आप लोगों ने? जब आपको इंजेक्शन चाहिए, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप जनरली सूट फाइल करते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में। लेकिन उस एक्ट में लिखा है कि इंजंक्शन का रिलीफ तब नहीं मिलेगा अगर कोई और एफिकेशियस रेमेडी आपके अवेलेबल है, तो आपको इंजंक्शन का रिलीफ नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि आपके खिलाफ से परमानेंट इंजंक्शन का केस फाइल किया है, तो आपको ये भी एक ऑब्जेक्शन लिखनी चाहिए रिटन स्टेटमेंट में कि इसमें अदर एफिकेशियस रेमेडी अवेलेबल है, इसलिए द सूट इज वैलिड, इट इज लायबल टू बी डिसमिस्ड। एंड आई एम अगेन सेइंग कि सारे डिफेंसेस नहीं है, जो आपके फैक्ट्स पे सेट ऑफ फैक्ट्स पे सूट करेगा वो आपने लेना है। बट अगेन रिपीटिंग, आपने प्लीडिंग में सिर्फ फैक्ट लिखने हैं, लॉ नहीं लिखना, जजमेंट्स नहीं लिखनी है। और अगर आप रॉन्ग लॉ कोट कर दोगे तब भी कोर्ट आपको रिलीफ देगा, आपका रिलीफ बनता है। लेकिन जो आपने फैक्ट्स या मटेरियल फैक्ट्स अपने प्लीडिंग में नहीं लिखे हैं, उसके ऊपर आप एविडेंस भी लिख दे सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज तो डिफेंडेंट विल ऑलवेज बी टेकन बाय सरप्राइज। ये तो कहीं लिखा ही नहीं था, अगर लिखा होता तो मैं अपना डिफेंस लिख के देता कि इसमें मेरा क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए कोई तरीका है करने का? अमेंड कर सकते हैं, एंड अमेंडमेंट किसी भी स्टेज पे हो सकती है। एक 12 में है plaintiff suit is barred by, so for declaration is barred by section 34। 34 में क्या लिखा है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में? अगर कोई डिक्लेरेशन आप मांग रहे हो और उससे आपको कोई और रिलीफ भी मिलता है और आप क्लेम नहीं करते, सूट इज बार्ड। अगर ये कहता है कि मेरे को डिक्लेरेशन चाहिए कि मैं बी का अडॉप्टेड सन हूँ, और उसको कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ ये चाहिए कि बी की प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा मिल रहा है। अगर वो समझता है आई वांट अ डिक्लेरेशन दैट आई एम अडॉप्टेड सन ऑफ बी एंड डज नॉट पे फॉर कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ, इसलिए आई एम एंटाइटल्ड टू अ शेयर इन द प्रॉपर्टी, so that suit for declaration will be barred by section 32। समथिंग लाइक जो ऑर्डर टू रूल 2 में पिछली बार था, जो आपने मांगा पूरा मांगोगे। तो अगर सेक्शन 34 में कर रहे हो तो स्पेसिफिकली से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, कि अगर आप डिक्लेरेशन का फुल फाइल कर रहे हो और उसमें से कोई कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ भी फ्लो करता है, तो वो भी आपको मेंशन करना है। Similarly, section 14 of specific relief act, contract for personal service cannot be enforced। मैं बोलूँ कि मेरे लिए एक आदमी पेंटिंग बना रहा था, उसको बोलो कि वो पेंटिंग आगे कंप्लीट करे, क्योंकि उसमें कोर्ट कह भी देगी तो उसको कोर्ट मॉनिटर कैसे करेगी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। लेकिन अगर आप बाद में वो प्रोविजंस नहीं पढ़ोगे तो 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में आप भूल जाओगे। आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से जो सेक्शन में आपको पढ़ के बता रही हूँ उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ध्यान रहेगा। सिमिलरली, जब भी गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल होता है उसमें पहले गवर्नमेंट को 2 महीने का नोटिस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि अगर गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कोई भी चेंज करना है, कोई प्रॉपर्ली रेमेडियल स्टेप्स लेने हैं, तो वो ले ले, वो पर्पस है। तो अगर गवर्नमेंट बॉडी के खिलाफ केस फाइल हुआ है तो गवर्नमेंट का कौंसिल जो है वो आके ऑब्जेक्शन उठाता है कि हमें सेक्शन 80 का नोटिस नहीं मिला, इसलिए ये केस जो है वो नॉर्मल नहीं हुआ है। वैसे ही रेंट कंट्रोल का है सेक्शन 14(1)(a। जो भी ये मैंने एबीसी ऑब्जेक्शन लिखे हैं, आप बेयर एक्ट तो बोलो ताकि आपको पता चले कि ये कैसे सस्टेनेबल है। ठीक है, फिर मेरिट्स पे आ गया। विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस लिखना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर ये केस प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस पे ही नॉर्मल लेवल है तो मेरिट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कि कोर्ट कन्विंस नहीं है, कोर्ट प्रोसीड करती है,
तो आप अगर अपना रिप्लाई और मेरिट्स नहीं दोगे पैरावाइज रिप्लाई, तो आपका बाद में रिकॉर्ड पे आ ही नहीं सकता रिप्लाई। ठीक है, तो जैसे पैरा वन ऑफ द प्लेंटिफ करेक्ट, इसमें शायद ये लिखा होगा कि प्लेंटिफ कौन है। पैरा टू ऑफ प्लेंट आर डिनाइड फॉर वांट ऑफ नॉलेज, ये इस तरीके से जनरली लिखते हैं, लेकिन ये बेयर डिनाइल नहीं है। आगे देखो पैरा नंबर 3 में देखो, it is specifically denied that plaintiff is the owner of the property as a matter of fact and is the owner of, तो सिर्फ प्लेंटिफ ने कहा मैं ओनर हूँ और आपने डिनाई कर दिया, वो सफिशिएंट नहीं है, आपको अपने फैक्ट ऐड करने पड़ेंगे डिपेंडिंग ऑन द केस क्या है। तो मैंने 5 to 10 में लिखा है each and every allegation must be replied specifically depending upon the facts of each case। 11, 12, 13 स्टैंडर्ड है जो आपने हर किसी में लिखना है। कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं हुआ, सूट प्रॉपर्ली वैल्यूड नहीं है, बार ऑफ लिमिटेशन है कि नहीं है। ठीक है, अगेन डिफेंडेंट थ्रू एडवोकेट डेटेड फिर काउंटर क्लेम या सेट ऑफ अगर कोई है। लास्ट टाइम आपको मैंने काउंटर क्लेम और सेट ऑफ का बताया था। ठीक है, अगेन वेरिफिकेशन एंड एफिडेविट, एवरी प्लीडिंग हैज टू बी वेरीफाइड एंड एन एफिडेविट इन सपोर्ट देयरऑफ हैज टू बी साइंड। अब जो आपके पिछले साल के एग्जैक्ट क्वेश्चन है डिस्कस करना चाहोगे आशीष? जो मेरे से जो आपके जो मैम ने मेरे से शेयर किया है उनमें से एक पहला ले रहे हैं एग्जांपल। They don't have a copy. I don't Okay. पढ़ लेंगे। So I read it out to you. If you want, you can note down the details. It says, on 4th of July 2000, I repeat the date. On 4th of July 2000, Radheshyam entered into an agreement with Ram Kumar for purchase of land of 5 acres at the rate of rupees 26,000 per acre. So that means that land of 5 acres has been purchased, agreed to be purchased. And the rate is 26,000 per acre, where the total consideration amounts to is 1,30,000. On the same day, because the purchaser is Radheshyam, the seller is Ram Kumar. Now, on the same day, Radheshyam pays rupees 20,000 to Ram Kumar towards advance. And the specific understanding is that he will pay the balance sale consideration within 4 months. If you want me to go slow, I will. Let me know. You want me to go slow? Okay. So, do you want me to repeat? Have you missed out something? Okay. जी. So, 4 जुलाई 2000, सन 2000, 4 जुलाई को राधेश्याम ने एक एग्रीमेंट किया है राम कुमार के साथ। राधेश्याम खरीदार हैं एंड इन्होंने एग्रीमेंट किया कि वो 5 एकड़ लैंड खरीद लेंगे राम कुमार से 1,30,000 रुपए में, जिसमें से राधेश्याम ने 20,000 रुपये राम कुमार को उसी दिन दे दिए। ये एडवांस था जो दिया। उनकी अंडरस्टैंडिंग यह थी कि बाकी जो बकाया अमाउंट है वो 4 महीने में दिया जाएगा। और जब वो 4 महीने में बाकी पेमेंट हो जाएगी तब एक रजिस्टर्ड सेल डीड करी जाएगी। सॉरी, राधेश्याम
paid the balance sale consideration on 20th of August 2001. यानी 28 अगस्त सन 2001 को राधे श्याम ने बाकी पेमेंट दे दी, उसको पोजेशन भी मिल गया लैंड का. After that, Ram Kumar executed a possessory sale agreement dated 28th August 2001 in favor of Radheshyam. राम कुमार ने एक अग्रीमेंट किया राधेश्याम के साथ 28 अगस्त 2001 को, जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये पोजीशन हम आपको दे रहे हैं. 4 जनवरी 2014 को, now I'll tell you, 28th of August 2001 is the date of this agreement, possessory sale agreement. After that, 4th of January 2014, there is a bank called Murthy Bank. It sends a legal notice to Radheshyam saying that this land which you have agreed upon, this was under an equitable mortgage with the bank. Now, anybody knows what an equitable mortgage is? Sorry? How many types of mortgages? 6, or after we can have another mortgage, we can Okay, so where are all these mortgages written? Do we know whether which law? Right, exactly, yeah. So the bank issues a letter, a legal notice, saying that this land, which Radheshyam had intended to purchase, was under an equitable mortgage with the bank. Radheshyam sent a legal notice, a reply to that notice. And he says that I am the owner and I am also in possession of this land. He also says that he was never informed by Ram Kumar about the said mortgage. Now, what you've been asked to do in the question is to draft a plaint on behalf of Radheshyam, claiming every possible type of relief, whether primary or alternative, which could be claimed against the defendants in the matter. Now, importantly in this question, because it's a question you have to take as it is. So they have not specified who the defendant is going to be. Okay. So on these, G. So yeah. So tell us. Yes, you were telling about the equitable. What is the person who is giving the mortgage and the possession of the property and the ownership, like the title deeds, is the bank or anyone? Yes. So what happens with an equitable mortgage, which is also called mortgage by deposit of title deeds? You should all be aware that mortgage can be done only by way of a registered instrument, except in case of mortgage by deposit of title deeds. It's the only exception. But in this exception, my original documents have to be given to the bank or whoever is the lender of money. So this is one of those. आप मुझे कोई ब्रीफली बता सकता है कि ये केस क्या है जो भी बताया? डेट वाइज मत बताओ, सिर्फ केस क्या है?
आप लोगों ने सबने फैक्ट्स लिखे हैं, माइंड अप्लाई किया है कि नहीं, इसलिए पूछिए कि आप में से कोई एक खड़ा होकर ये बता सकता है कि इस केस में हुआ क्या है। इस केस में राजेश श्याम ने एक लैंड खरीदा डिपेंडेंट दूसरे पर्सन से, जिसमें उसने टोटल 5 एकड़ का उसने लैंड लिया था, जिसमें 1,20,000 टोटल कंसिडरेशन अमाउंट था, जिसमें 20,000 एडवांस पहले दे दिया था पेमेंट में, और 1,00,000 रुपीज था कि 4 महीने के अंदर उसको पे करना होगा। उसके बाद अगस्त में उसने पे कर दिया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो पोजेशन है उसको मिल गया। देन कुछ 2014 में जो बैंक है उसने ये कहा कि जिस पोजेशन, जिस लाइन के पोजेशन में आप हो, उसका जो इक्विटेबल मॉर्गेज है वो हमारे पास है। तो ये पूरे केस का मैटर है, और यहाँ पे अपने को ये अप्रूव करना है कि उसके अगेंस्ट, मतलब उसको क्या क्या और किसके खिलाफ होगा। इसमें मतलब अच्छे से बताया नहीं कि डिपेंडेंट कौन होगा या तो आपने पहले पूरा प्लान पढ़ लिया, फिर अपना माइंड मेकअप कर लिया कि ये सेट ऑफ फैक्ट्स है। मैकेनिकली तो लिख लिया, इस तारीख को ये हुआ, इस तारीख को ये हुआ, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको प्लेन में लिखना भी होगा। लेकिन जब आपके सामने पूरे फैक्ट्स होंगे तब आप माइंड अप्लाई कर सकते हो जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आप किसके खिलाफ केस फाइल करोगे। मैं इसलिए देख रही थी क्योंकि आप सब लोग डेट लिख रहे थे और लिख रहे थे क्या हो रहा है, बट आई डोंट थिंक कि किसी ने होलिस्टिकली पढ़ा था या जानना था कि क्या करना है। बढ़िया। Yes. Well, Because they are students of yes, law, so exactly. Yes, you're right. we are not dealing with judges. Yes, of course. So I expect you all, for example, put yourself in the shoes of a lawyer. And suppose I come to you as a client, saying that, sir or ma'am, I have spent my lifetime savings to purchase a land. I have done everything I could. I have complied with the terms of agreement. I have made the entire payment. I have got documents. I am in possession. And suddenly one fine day, I receive this notice from the bank which says that the land was mortgaged. Now, so when I come to you with this, what will you advise me? I'll say, sir, I just want my land and I want it clear of title. I don't want any cloud over the title. I don't want anybody to raise questions over my ownership of the land. And why should I pay a single penny more when I have already agreed to pay a certain sum and I've already complied with that? So, how will you solve it? Anybody? Okay, that's one view. Anybody differs? Anybody has a different view on this? So, which kind of suit would you file against the seller? Recovery of? No, but declaration, he is not even disputing that right. If you sue him for a declaration of title, the court will ask the opposite party, or suppose he comes to the court and says, yes, I concede. So the honorable court may pass a decree in favor of Radhesham, declaring him as the owner. Suppose he says this, and the court passes the decree. What will happen? The vendor will be out of the picture. You have a decree, but bank will continue to say that here our money has not been paid, so we are going to take over the title of the land. The problem today is not being caused by Ram Kumar. The problem is being caused by the bank. Because the bank says that it is under our mortgage, so we will take over the land. So anybody takes a different view? Any other suggestion? बैंक को सिंपली करेंगे कि नहीं करेंगे, बैंक को डिपेंडेंट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, कि बैंक को भी बनाएंगे और उसमें बेचा आपको भी बनाएंगे। Okay, then what relief are you going to see?
रिलीफ फैक्टर होता है, उसमें जाकर के टाइटल वापस क्लेम कर सकते हैं। Okay. So, but is there a suit by the title of recovery of title? No. पर्टिकुलर मॉर्गेज में जब टेनेंट डीड्स बैंक को देते हैं तब जाके मैं लोन देता हूँ। Correct. Exactly. टेनेंट डीड्स के ऊपर क्वेश्चन Um, वो डिपॉजिट रहते हैं बैंक के पास तो लोन मिलता है। करेक्ट, आप ठीक कह रहे हैं। तो आप मान लीजिए कोई उस बैंक को पेमेंट दे देता है, फर्ज करो कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया किसी बैंक में, और उसके बाद मैं पेमेंट कर देता हूँ और बैंक से मुझे अपने प्रॉपर्टी के कागज वापस चाहिए और बैंक नहीं देता, तो मैं क्या दावा करता हूँ बैंक के? Disclosed by the seller when he is selling the land. So suppose, yes, so he did not disclose, then what? Suppose he is not disclosed. So what is the remedy out of that? Sorry? The seller have to pay up to the bank. I have already purchased the land from according to the agreement and according to the conditions of the Yeah. agreement. Yeah. And the material facts was not disclosed to me when I was purchasing the land from the seller. And so the seller is to be liable to the bank by the purchaser. Okay. Okay, that is one view. Absolutely, you're right. But today, the task assigned to you is not to become a judge. You are a lawyer. So if you go about telling your client that, look, you did not exercise due diligence, so you say, okay, I know this. I know this because I did not see the original title deeds. But so what? So you will say that I should just leave your office? That's not the task given to you. You have to, because this question, if it comes in your exam, you can't respond that, oh, he did not exercise due diligence. Today, howsoever defective or whatever mistakes he did, today you have to take up his case and get him justice. Yes. Anybody? Yes. To waive off his own liability to pay it to the bank and to transfer it to the seller. Or the most important part is to waive off his own liability to pay it to the bank because he has received the notice from the bank. Okay, are you saying waiver? Waive off, did you say? Yeah, because bank might be asking him to pay so that pay for the mortgage. So he should ask for a relief that he should not be asked by the bank for this. Actually, in law, we don't use the term waiver. Waiver has a different connotation altogether. Waiver is where, suppose I have a contractual responsibility, then I can seek a waiver of that on certain grounds. But here, the person concerned, he is not suing for that at all. And you can never sue for waiver. You can always, because I don't go to a court to say that X should not ask me for money. I can say if X has sued me for money, I will place my defense before the court. But nobody can himself put his hand in my pocket to take out the money that I have there. Are you getting my point? Okay. So when they sue me, then I'll defend myself. But unless and until something of my own is mortgaged. So in mortgage, there are two kinds of suits. One is called a suit for redemption. Sorry? Excellent. So what is a suit for redemption and what is a foreclosure? The person has the right to redeem the property. He is going to mortgage the person from a mortgage. But the suit of foreclosure, the person has a mortgage the property. That the mortgage has the right from the mortgagee to have this property get back the property to the owner. Yes. So what happens is, if I have mortgaged my property with a bank, the bank, and if I am in default, so certain kind of mortgages, the bank will have to sue me to perfect its title. Because if the bank wants to sell the property, a purchaser to whom the bank wants to sell it, they may say, we don't know whether Ashish Agarwal defaulted in payment or not. You are trying to sell us that property. So it has to perfect its title. If it wants to sue, it will sue for foreclosure.
Okay. And if suppose I want to take back, I want to cancel the mortgage and I want to take back the property or its papers, then I will sue for redemption on the ground that I have already paid the money that I owe to the bank. So in this case, what happens? Any other suggestion of what can be the possible suit that will be filed? Yes, sir. Okay. So there is no such thing as a suit for fraud. Okay. Because when we say suit for, that we have to say what is the prayer that you pray. We don't pray that there should be fraud. So we don't, there is no such thing as a suit for fraud. Yes. So based on fraud, we can sue for XYZ on the where you describe the reliefs that you are seeking. Okay, so what is the relief that you are referring to? This is the basis. But what is the prayer that you are going to make? Okay. Here what has happened in the facts of the case? He's got an agreement which is called a possessory agreement. But he's not got a registered sale deed. Radhesham, in order to get perfect title, he needs a registered sale deed. Now, how does he get a registered sale deed? He will have to ask the vendor to go to the sub-registrar to execute a sale deed in the presence of the sub-registrar and have it registered. And because the basis of this relief is a contract, he is going to ask for specific performance of the contract. All right. The relief that he is going to seek is specific performance of the contract from Ram Kumar. And if you've gone through the Specific Relief Act, while seeking specific performance, one can also seek that the vendor should perfect his own title by making payments to the bank. Got it? So you will come, therefore Radhesham will compel Ram Kumar to perfect his title by clearing the mortgage and releasing the title deeds from the bank by making payment to the bank or whatever money he owed. And at the same time, he needs to sue the bank that the bank must not, meanwhile, must not recover possession of the land because he is a bona fide purchaser or in ignorance of the earlier mortgage. Are you getting? Because his relief will otherwise get frustrated in the event of the bank taking over the possession, because the bank has powers under the SARFAESI Act as well, or it can anytime seek foreclosure and sell the property. So he needs to sue both the bank as well as this gentleman, Ram. Got it? And in that suit, he will have to pay the value of the land as per the contract. Because it's a suit for specific performance. Because you will have to state in your, because here you've been asked to draft a plate. And in the plate, you, as ma'am had pointed out, there will have to be a clause where you will need to mention the valuation of the suit for the purpose of court fee and for the purpose of jurisdiction. Okay? Are you all aware of what is the difference of the value of a suit for the purpose of court fee and for the purpose of jurisdiction? Have you all gone through the Court Fees Act and the Suits Valuation Act? Okay. So, well, that I don't think we are going to cover that today. So, maybe in the other session that ma'am takes, or maybe your classes here will be explained to you. I will not cover that today, but when you put these facts in the backdrop of the law of how the suit is to be valued, you will come to a value, and that you will have to state that in that way, because the examiner will test you on that. Got it? Any doubts?
So, ma'am, then further. Now, this is part A of the question where you draft a date. Part B is where you draft a written statement on behalf of Ram Kumar in reply to the aforesaid, which means that earlier you had put yourself in the shoes of the lawyer for Radhesha. Now you are a lawyer for Ram Kumar. In the plaint. I am coming back to A part, where you drafted the plaint. Anybody can explain how you would draft the plaint? Suppose with these facts, you can just say it orally. How are you going to go about it? पहले in the court of court Yeah. suit number and इसके बाद पेट का आदेश बाद प्रोसेस डिपेंडेंस राजकुमार ऐड करता है उनके एड्रेस आपने डिस्क्रिप्शन के for special performance and Persian bank Okay. Okay. and this is the most respected with market facts. Yes. No, this is exactly. So say those facts. Spell them out. This is the bona fide purchaser of such and such property. Hmm. And he bought such and such property on such date from the issue and purchase agreement. Hmm. And after on such and such date, he आपको कुछ फैक्ट्स तो अपने आप ही पता है डिपेंडेंट ने बताया कि प्रॉपर्टी मिली तो प्लेंटिफ ने कहा कि किसी को देना था इस तारीख को कहा मैंने तो कहा आप सोचो कि आप लॉयर हो कोर्ट को अपनी पूरी लॉ कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट्स इसमें नहीं लिखे होंगे है ना तो आपका आगे से चेक कर दो प्लेंटिफ ये है डिपेंडेंट ये है जो वहाँ पर रहता है प्लेंटिफ को डिपेंडेंट ने बताया कि उसकी प्रॉपर्टी है प्लेंटिफ ने फिर वो आगे जैसे मैंने पूछा था कि राजकुमार से कि प्रॉपर्टी में कोई और लायबिलिटी तो नहीं हो प्लेंटिफ ने कोई वो डिपेंडेंट ने प्रपोज किया तो प्रॉपर्टी को फ्री ऑफ तो हमने एग्रीमेंट से सेंड किया है और फैक्ट को लिखने पड़ेगा तो आगे से कुछ नहीं आधे ही चीज का वो है आगे कुछ सकते हैं पेमेंट डिटेल्स भी अटैच करनी कैश की बात आती है पढ़ के बताओ अगर आप प्रिंट बना रहे हो वकील हो तो आप क्या लिखोगे वो एक कोने में हमने से सर अभी से ये कोने मतलब कोने के बच्चे तक तो पोस्ट या और लोग but it's natural that and just giving some of this to cover. Okay. Okay. So, but whenever if you write this, you will also have to specify as to when the denial came up. Okay, and you will have to see whether that is within the period of limitation or not. I'm not sure if we can find because this is not stated in the facts. Okay. Then what else will you state? No, you will not. There are still facts still to go. He denied. Then what happened? Okay. After some time, he just joined this position and all the position rights, like he joined the position, this court have right of this position also. After court in court में ये क्यों मैंने उसको उसके लिए position दे दिया तब मैंने उसको बोला रजिस्ट्रार के पास हुआ तो उसकी कोई एबीसीडी नहीं है अब जब नया कैसे बताया कि ये नहीं और सही के साथ कहते रहे
टाउन ऑफ मनी से तो मैंने उसको नोटिस भी दिया राइटिंग में भी रिक्वेस्ट करी है डिस्पाइट किसी भी माइनर या रिक्वेस्ट उसने नहीं बनाई और फिर उसके ऊपर फैक्ट आएगा कि बैंक से आपको कुछ फैक्टर्स तो आपको बनाने हैं 2004 से 2014 तक एक प्रॉपर्टी में बैठे हो और आप कह भी नहीं रहे उसको भी चल रहे रजिस्टर डॉक्यूमेंट रजिस्टर तो करवा लो तो अभी ये स्टूडेंट ओनर की ड्यूटी है ना कि अगर उसकी प्रॉपर्टी ले दी है तो वो डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करवाएगा तो कुछ एडिशनल फैक्ट आपको लिखने पड़ेंगे तो मैंने उसको बोला ये भी क्या फैक्ट है Then what else? What else will you mention? Then you will say that on one fine day I received this one notice from the bank, and this is what the bank claims that there has been an equitable mortgage, and then I've been suddenly taken aback, and I now because of this I am aggrieved in the ABC manner because now there is a threat that my possession will be disturbed and my title will not be perfected. So because of this, there is a cause of action which has approved on ABC date, which is why I am having to file this suit. Okay, then you will say that now ABC, this is the suit that I have filed. Then you will say that how all those technical issues that ma'am had covered, limitation, pecuniary jurisdiction, subject matter jurisdiction, all of those things you are going to mention. And then finally, the prayer that in the prayer clause and that in the yes. क्योंकि आप कोर्ट में नहीं खड़े हो आपका लॉयर ही है तो कोर्ट में लॉयर को एड्रेस करते हैं तो वो अपने आप को आई कैसे कर सकते हैं तो ये नहीं कहते कि प्लेंटिफ ने ऐसा किया या प्लेंटिफ ने ऐसा किया वो कोर्ट को इस तरीके से आर्गुमेंट एडवांस किया कि आई लेकिन जब आप लिखोगे जो प्लेट में लिखा हुआ तो मतलब प्लेंटिफ के बदले प्लेंटिफ लिखा हुआ डिपेंडेंट दूसरे तरीके से लिखा हुआ अगर बैंक की पार्टिसिपेंट है तो डिपेंडेंट नंबर 1 नंबर 2 जहां जहां क्लियर क्या लिखोगे पहले बच्चे को प्रोग्राम करोगे कि क्या So you will say in the aforesaid fact and circumstances, the honorable court may please be passed, may be pleased to pass the following, yes. Then a degree of, then first point number 1, a degree of specific performance. And anybody try it? Try say. इसमें क्या और इन द ऑल्टरनेटिव अगर आपको लगता है कि इसमें आपको मुश्किल है चीजें करवाना तो आप ये मान सकते हो ये मेरे पैसे लगा Yes. विद इंटरेस्ट Yes. तो इन द ऑल्टरनेटिव Exactly. आगे पैक में एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट Yes. So that will be permanent injunction. Okay. So your first relief is going to be a degree of specific performance compelling the defendant number, if Ram Kumar is your defendant number 1, so compelling the defendant number 1 to make payment of the entire dues of defendant number 2 bank and to really get the property documents released and to clear the title and then to execute a conveyance deed in favor of the plaintiff and have it registered with the sub-registrar. Okay, so second, a degree of permanent injunction restraining the bank from recovering possession or disturbing the peaceful possession or title of the plaintiff from X property. Then in the alternate, your C is going to read that in the alternate, a degree of recovery of money against defendant number 1, not against defendant number 2. And sometimes people write defendants. Do not do that because that degree is only something that you are going to seek against defendant number 1, that is Ram Kumar. For that he shall pay me the sum that he is paid along with so and so interest at so and so rate and pendental items and future interest. And lastly, cost of the suit. Cost is never covered under for the purpose of suit valuation, court fees, jurisdiction. Got it? And you don't even have to specify the amount of cost. Yeah. Yes, you can. Yes.
Yes, you can do that, and it will not even be an alternate relief. You can seek it in addition to the other reliefs. सब्सिडी रिलीफ एक्ट में लिखा है कि आप सब्सिडी को फॉर्म में से मांगते हो तो आप कंट्रीब्यूशन भी मांगते हो। Yes. उसमें मतलब एक्ट के अंदर लिखा है। ठीक है, और आप लोगों को इसको नहीं लिखा कि हमको लिखे हुए No, temporary injunctions you don't seek in your plate. Then you will move along with the plate, you will move another application under order 30 and rules 1 and 2 of Code of Civil Procedure. In that you will seek a temporary injunction. इसके लिए आप लोग उसके वो तीनों पैराग्राफ मैंने आपको फॉर्मेट शेयर किया। आप लोग एक खुद ड्राफ्ट करके देखेंगे तो आप किस हद तक ड्राफ्ट कर पाएंगे। एक तो ना मैंने जो देखा वो ये है कि अगर आप खुद एज अ बायर रहे हो जैसे मान लो कि आपके चाचा का ताया का फादर का किसी का उनका वो होगा उनके साथ, तो आप गुस्से में आते हो और टैक्स में ये कर देंगे वो कर देंगे, हम वकील को बोलेंगे ये कर दे रखे रखे, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो एग्जाम का क्वेश्चन बना तो ब्लैंक बन गया। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम आल्सो कि आप सोचो कि आपके साथ ये हुआ है, जब आपके साथ ये होगा तो आप क्या करोगे ये सोचोगे, तो आपको जो 10 मिनट से देखते ब्लैंक थे कि किसको क्यों कर रहा है, क्या क्यों कर रहा है। आप सोचोगे मेरे से कोई पैसे लेते हो मुझे अपनी प्रॉपर्टी में दिखा दे और कल मुझे नोटिस आ जाए कि बैंक के पास ये प्रॉपर्टी पे मॉर्गेज पड़ी है, तो मैं जाके लॉयर को क्या बोलूंगी, जो मैं लॉयर को बोलूंगी भाई आप इतने क्यों लिखते हैं। लॉ क्या है, वही तो है जो हम मांग रहे हैं। लॉ को अलग खड़ा कर देते हैं, खुद को अलग खड़ा कर देते हैं, दोनों चीजों को इंटीग्रेट क्यों नहीं करते। The moment you will step into the shoes of defendant or the moment you will step into the shoes of plaintiff, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। लॉयर के पास जाओगे तो लॉयर बोलेगा ना क्या चाहते हो आप, क्या चाहते हो, क्या करोगे, क्या चाहते हो। अभी मेरे नाम पे रजिस्टर डेट हो जाए और बैंक जो है वो मेरे पास कर, इसलिए जिससे मैंने खरीदा वो जाके बैंक के पैसे दे। ये तो 3 बातें बोला ना, यही आपकी प्रेयर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देख के डरने की जरूरत है। अगर किसी आपके अपने के साथ होता तो जो आप करते, गुस्से में करते, परेशान होकर करते, दुखी होकर करते, तो जो रिलीफ आप मांगते लॉयर के पास जाके, अभी आप खुद ही लॉयर बन गए, बस इतना ही फर्क है। रिटर्न स्टेटमेंट में क्या लिखोगे, वो सेकंड पार्ट है। जिस तरह वो आपके दिमाग से वो ब्लॉक निकालना चाहती है, जो एकदम से आगे अरे एग्जाम में क्वेश्चन है क्या, एग्जाम में जो क्वेश्चन है वही लिखोगे जो अगर आपके साथ होता तो, या अगर आप लॉयर होकर फिर लेके आता तो आप एकदम नहीं बन सकता। की और से करवा देंगे शिक्षा, मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने ऐसा कभी कैसे है। एवरी डे यू कम अक्रॉस न्यू फैक्ट, एक सिविल कोर्ट होल्ड करोगे तो पता नहीं कौन से केसेस आएंगे जिससे टोटली अनरिलेटेड रिलीज होंगे। किसी के ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट होंगे, किसी के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट होंगे, किसी के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होंगे, किसी के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में होंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे आ सकते हैं सिविल कोर्ट के पास, बोला नहीं। इमेजिन कीजिए आपके साथ हो रहा है, तो मोमेंट यू वुड इमेजिन कीजिए आपके साथ हो रहा है, वो तो एकदम पॉइंट ब्लैंक हो गए थे ना कि पता नहीं क्या करना है, वो नहीं है। अब उसने आपको अगर लगता है कि उसने अपने पास फ्रॉड नहीं किया है कुछ छुपा के, तो फ्रॉड कैसे बना वो भी आपको अपने फैक्ट्स में डिटेल लिखनी पड़ेगी। मान लो कि बस मैं कहती हूँ कि उसने मुझे डॉक्यूमेंट दिखाए वो कलर हो गए, इसलिए मैंने आगे पढ़ लिया आपका, तो मुझे रिपीट करना पड़ेगा। जब मैंने उसे कॉपी मारी उसने मुझे चेंज किया, लेकिन उसमें जजमेंट लिखूंगी तो जजमेंट में मुझे एज अ जज ये कहना पड़ेगा कि वो जो सेल डीड दिखाई गई जो उसने कहा है कि कलर फोटो कॉपी है, वो मैंने जाके फिर मैंने एफएसएल में भेजी और कंफर्म हुआ कि हाँ कलर फोटो कॉपी है, तो उसका एक विटनेस बन गया। ठीक है, तो
थोड़े दिन पहले ही मैंने आपसे जो पढ़ के सुनाया था, स्पेसिफिकली कहा था कि आप लीगल नोटिस का जरूर लिखोगे। और अभी जो आपने फैक्ट पढ़े वो आपने सिर्फ क्वेश्चन पेपर के कुछ फैक्ट उठाए और लिख दिए बस। अगर आप स्टूडेंट होते, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो जो कुछ आप करोगे वो सब आप फैक्ट करोगे, ठीक है? रिटन स्टेटमेंट, सॉरी। Yes. Now, रिटन स्टेटमेंट का बताओ। yes. Before I come to written statement, just one important fact that I wanted to point out to all. Have you all done Transfer Property Act? It's going on. So, has any of you gone through Section 53 Capital A? Yes, part performance. So this question is based on Section 53A, which means that even if just by chance, I'm saying, that even if he does not succeed in obtaining specific performance, his relief for injunction restraining the bank can be sustained short of having a registered sale deed because of Section 53A. Okay, I am telling you this because you might ask that once he gets a perfect title, then he would automatically get relief against the bank. But short of that as well, he can sustain his relief against the bank, which is why we made the bank a defendant. But now coming to part B. Part B, because the question itself has specified that the written statement is that you are going to draft is not going to be on behalf of the bank, but only on behalf of Ram Kumar. So now you have a plaint that you've already drafted, and you have to counter that plaint in your written statement. Tell me, what are you going to say in your written statement? Anybody? Same structure. क्या I beg your pardon, sir? Excellent. इसमें लिमिटेशन का क्या बात है? और आपके पास फैक्ट है। मैंने इनको मेल किया था जब मेरा एक्शन से सेंड कर दिया तो फैक्चुअल Because he'll say that the agreement to sell was executed in the year 2000 and the suit has been filed post 2014 and it's only when the bank had. So that means at least 13-14 years gap is definitely there in the institution of the suit from the date of agreement to sell. Right? So that's one. That's acknowledgement only extends the period of limitation. Do you get me? No, you know what the law of acknowledgement is. Have you all studied the Limitation Act? So maybe once you study it, you will get to know on how an acknowledgement always assists the plaintiff in establishing limitation, provided the acknowledgement has happened before the expiry of period of limitation. लिमिटेशन एक्ट में आपको पीरियड दे रखे हैं जिसके बियॉन्ड आप केस फाइल करेंगे। लिमिटेशन एक्ट में आखिर में कुछ टेबल बने हुए हैं, अगर आपको कोई भी रिलीफ क्लेम करना है और फाइलिंग द सूट तो उसमें पीरियड लिखा हुआ है कि अगर आपने पोजीशन का केस फाइल करना है तो जिस दिन आपका अधिकार शुरू हुआ 12 साल के अंदर आप कर सकते हैं। किसी से पैसे रिकवर करने तो जिस दिन आपका मनी रिकवर लेने का एंटाइटलमेंट हुआ उसके 3 साल के अंदर केस फाइल करें। उसके बियॉन्ड अगर आप करोगे तो आपको वो रिलीफ कोर्ट के थ्रू मिलेगी। लिमिटेशन एक्ट का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है। Good for specific performance में उसमें 3 साल लिखा है। कितना लिखा है जाने? Yes, 3 years. 3 years। तो उसने एग्रीमेंट तो सही किया 2004 में वो 14 में प्लेसमेंट करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का तो 12 लिमिटेशन। जब लिमिटेशन एक्ट से पढ़ा चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो
उसमें सूट के लिए अलग पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, अपील के लिए अलग है, रिव्यू के लिए अलग है। लेकिन आपको जो कि अपील वगैरह का नहीं आएगा, सूट पे आएगा, इसके मतलब सूट का बेसिक प्रिंसिपल आपको बताएगा। तो 12 लिमिटेशन ये होता है कि 3 साल में फाइल करना था, नहीं करा। मैंने एग्रीमेंट तो सेंड किया था 2004 में, पोजीशन दी थी 2005 में, केस फाइल कर 16 में, तो 12 लिमिटेशन। वो जो कह रहे हो आपके मैंने तो जेल से कर दिया था, ये हो गया, ये हो गया, वो मेरिट्स पे आएगा। आपने जो भी प्लेन ड्राफ्ट की होगी उसके उस प्लेन के पैराग्राफ दर पैराग्राफ आप अपना रिटर्न जवाब दें। और सर इसमें जैसे कंप्लेंट में हमने ये कहा था कि रजिस्टर्ड सेल डीड तो हुई नहीं है, तो यहाँ पे डिफरेंस का ये ले सकते हैं कि राम कुमार ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने रजिस्टर्ड सेल डीड इस डेट को रखा था और कुछ लोगों के सामने कुछ विटनेसेस को बना सकता है, तो ये तो डिफरेंस को ले सकते हैं। डॉक्यूमेंट प्लस के बैंक डिटेल्स, इक्विटेबल मॉर्गेज में आपके जो ओरिजिनल बैंक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है बैंक में, तो वो ये भी डिफरेंस ले सकता है कि जब हम अग्रीमेंट कर रहे थे तो ये बात हमने प्लेनटिफ को बता दी, ये ले और हमने एग्री किया था कि ये बैक कर सकता है। और पहले आप प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन क्या कह रहे थे, तो उसके बाद ये तो लगता है कि जैसे पोजीशन जैसे एग्रीमेंट किया था किसी से ना, कोई ट्रांसफर डील की बात नहीं, कोई टैक्स की बात नहीं, तो जो कि जब तक किसी को मिल सके। Okay. इसमें टैक्स की जुर्माने की जो 4 जुलाई 2000 को 20,000 जो उन्होंने ये बोला था कि विद इन 4 मंथ्स आपको बाकी का अमाउंट पे करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट उन्होंने फुल अमाउंट पे किया है वो आफ्टर 1 ईयर किया है। Yes. ये भी एक मेंशन Yeah, so you are in default of the agreement of which you are seeking specific response. Anything? पहले आप क्लेम बना के देखो, क्लेम के सामने उसके डिफेंस का सिर्फ प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन है जो कभी कर सकते हैं, क्योंकि अंडर वैल्यू और फीस कम दे रखी है और सेक्शन अराइव ही नहीं हुआ, क्लेम जब डिवॉइड ऑफ एनी कॉर्नर सेक्शन एग्जिस्ट उसके बाद आपका पैरावाइज अप्लाई करेगा, पैरावाइज अप्लाई में आप वही लिखोगे क्लेम को, जो क्लेम में फैक्ट है उसमें जिनको आप मानोगे उसमें लिखोगे जैसे मैटर ऑफ रिकॉर्ड या एडमिटेड। कुछ चीजें हैं जो आपको पता ही नहीं, मान लो कि वो कहते हैं कि उनको पड़ोसी वाले ने बताया था कि ये प्रॉपर्टी तो ये तो डिपेंडेंट गॉड है, देन यू विल से डिनाइड फॉर वांट ऑफ नॉलेज, मुझे नहीं पता कि इसको क्या था, तो डिनाइड फॉर वांट ऑफ नॉलेज। हाँ हमने एग्रीमेंट को सही किया और हमने एग्रीमेंट कहा तो डेलीगेट की जरूरत है, पार्टी एग्रीमेंट हो जाता है। जितना आप लोगों ने सीपीसी पढ़ा है, जितना आप लोगों ने इंग्लिश का समझा है, उसके आधार पे आप अपने आप कोशिश करो क्लीन बनाने की, अपने आप कोशिश करो स्टेटमेंट बनाने की। जब आप खुद बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने उसमें कितने इमेजिनरी फैक्ट्स डालने हैं या नहीं डालने हैं, और उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है एक्सेप्ट वन कि आप खुद लेते हो या आप खुद लिखते हो। जब तक आप ये इमेजिन नहीं करोगे आप अच्छी प्लेट बनाएंगे। लॉयर बनोगे तब भी ये होगा कि शुरू में आपको इसी तरीके से चलना पड़ेगा, देन एज यू ग्रो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपको सही आ रहा है। अर्जुनली आप अपने फेलो कोलीग से पूछते हो, अपने सीनियर से पूछते हो कि हमने ये वाला केस फाइल करना है, उसका फॉर्मेट हमको लगता है, ठीक है। तो आज भी ये होमवर्क है, मैम शेयर करेंगे कि मैम के बच्चे क्वेश्चन डिस्कस करें, क्वेश्चन शेयर आपके लोगों को क्वेश्चन शेयर कर लेंगे, उसके बाद आप बनाते हैं तो अपने और कुछ क्वेश्चंस पर कुछ पूछने हैं। मैम जो इसमें परमानेंट इंजंक्शन का जो बात करा गया था तो रिटन स्टेटमेंट No, this you don't have to do that because it's not on the, that is a relief sought only against the line.
whereas your written statement is only on behalf of Mr. Ram Kumar. उसमें आप देखोगे this para does not pertain. Yes. Okay. Had you been playing it on behalf of the bank, suppose you were preparing the written statement, there you would say that you and I do not have a privity of contract. Okay, and whatever release you have to seek is on behalf of them. And we are only enforcing our contractual rights because and that our agreement had taken place prior in time and therefore takes precedence over your agreement with the vendor, etc., etc. So there will be a host of offenses. But that's not the question here. आप अपनी ट्रेन में भी लिखो कि बैंक का मैच्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अभी तो मैं कह रही जैसे ही आप खुद को ट्रेन से इमेजिन करोगे तब ये सारी बातें आएंगी अभी मुझे क्या पता बैंक से क्या होगा बैंक को मैं कैसे बताऊं कि मेरे को देखो मुझे बताया जब आपके क्वेश्चन उसको निकलता है वो अभी सर एग्जांपल पेपर जिसमें आप देख करके आइडिया निकाल सकते हैं मैंने दी है कि आपको सर मैम ये मतलब फॉर्मेट है जो आप रियल में जब करते हो तो रियल You want to see a real plaint and a real written statement. I think that you can provide. Yes. That's not a big issue. We have it provided. Yes. ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है तो हमसे ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखे देंगे तो मिनिमम लिमिट होनी चाहिए कि इतने पॉइंट्स नहीं है एक पेज के लिए सेंटेंस पैराग्राफ आएंगे नेगेटिव की डिस्क्रिप्शन आएगी डिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन आएगी इन्हीं फैक्ट्स को आप वही तो मैं आप इमेजिन करो कि आप एक पॉजिटिव न्यूज़ में जाते हो तो कितने मिनिमम फैक्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए टॉपिक में आपको कैसे पता कि वो प्रॉपर्टी उसके बेस पर किसी ने बताया वो बेच रहा है गवर्नमेंट ने बताया कि वो लिखोगे ना कैसे पता कि वो प्रॉपर्टी और सर मैं ये नहीं कह रही कि आपको 15 पेज की पेज बनानी है ये नहीं कह रही कि आपको 4 पेज की पेज तो जो बेसिक जरूरी है वो तो लिखोगे और क्रोनोलॉजिकली लिखोगे और मटेरियल फैक्ट में मेरे लिखना कि मैं सुबह घूम के भी जा रही थी तो बच्चे ने सोशल मीडिया में बताया कि लाइव प्रॉपर्टी के लिए मैं उसको कर दिया था कि साइट में मटेरियल फैक्ट No, you don't have. It's if they ask you only for a plaint, then do it only for a plaint. And they will never ask you to prepare a draft of the Bakalukan as well. That's never going to be asked. Yes. 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 Verification is a part of the plaint. Okay. And I mostly in the question paper, they are not going to ask you about the commercial code side. Otherwise, there will also be a statement of truth. But I don't think it's in the syllabus. Yeah, so just stick to a verification clause. Okay, and always remember verification clause they are very important because you have to separately point out the facts which are in your knowledge and facts which you got to know from information which you have received. So whatever has happened in my presence. So for example, when Radhesham, he says that I entered into an agreement with Ram Kumar, in the verification clause, he'll say this is something that I'm personally aware of. Okay, whereas there could be facts which relate to what happened, transpired between Ram Kumar and the bank. So he'll say that this is what I get to know from on the basis of the notice, information received and believed to be correct. Okay, and the last paragraph we will say is the prayer clause, because prayer clause is not an assertion of fact. You don't say that it is in my knowledge or somebody told me about it. This is what I believe that I am entitled to. So in the verification clause, you will simply say the last paragraph is the prayer clause. Got it? So for caveat, Yes. उसके लिए अलग से हम Caveat is under section 148A. I'm not sure if it is in your syllabus, but a caveat is only where you give notice to the opposite party and you register it in the court saying that in the event of you instituting a suit against me, then you have to give prior notice.
के अलग ही फॉर्मेट होता है। Yes, yes, CPC में भी, yes, it is in CPC. CPC में है। Yes. So just follow that format. Mostly they will not ask you about KVL because it's a standard format given in the statute. But there is no scope for application of mind. अभी इसमें मैं वैसे एग्जांपल बता रही हूँ कि प्लेटिंग इंस्ट्रक्शन में हमने बताया कि डिपेंडेंट कौन है, देन उसके बाद प्लेटिंग एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटेड है, उसका डिपेंडेंट और दैट ऑन सेकंड स्टेप प्लेटिंग एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटेड जो भी मैं उसको साथ में लिखता हूँ इस तरीके का शुरू करते हैं। ये वो देखिए से सारे तो अगर तो आपको एक वजह से ये मटेरियल फैक्ट दिया जाएगा आपने यहाँ से शुरू करके कि हाँ आपने डिपेंडेंट के साथ ये एग्रीमेंट किया वहाँ से शुरू इमेजिनरी जो वाले पर तो वो ऐसे होगा होगा कि जैसे हमने डिस्क्रिप्शन से चालू किया कि प्लेन डिफरेंट डिस्क्रिप्शन डिपेंडेंट होगा, फिर उसके बाद जो मटेरियल उन्होंने शेयर कर ड्राफ्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो ड्राफ्ट का नाम तो नहीं यहाँ पर विल कम टू नो कौन कौन सा करेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की टेक्निक में क्योंकि आप लोगों ने एक तो भी आप लोगों ने सारे स्टैट्यूट्स नहीं पढ़े, इससे बड़ा है क्या था तो हम शेयर करेंगे मेरे ये तो मेरे भी लॉयर पता है बैंक को जब डिपेंडेंट बनाया था सर अपन ये क्लेम कर सकते हैं कि अभी मतलब एग्रीमेंट तो हुआ नहीं, मतलब जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है वो हुआ नहीं सर, बैंक ने नोटिस भेजा था सर राधेश्याम, जबकि जो बैंक के पास टाइटल डीड थे उस पर राम कुमार का नाम सर, जो नोटिस जाना चाहिए था वो राम कुमार को जाना चाहिए था क्योंकि टाइटल डीड अभी राम कुमार सर, ये अपन क्लेम कर सकते हैं। एक मैंने कहा ऐसा प्रिंसिप से अभी वो बोलो कि बैंक ने मेरे को भी भेजा मेरे को प्लान में बड़ा सा Okay, and when you are from the bank side, you will say it's a covenant running with land. Mortgage is always a covenant that runs with land. You must be all aware of covenants running with land. Yes. So what happens is, for example, I purchase a house and there are restrictions on the use of the house. For example, nowadays there are apartments you will find in high-rise buildings where if I am purchasing a land, the seller, the builder from whom I am purchasing it, he makes a condition that if you are going to wash your laundry, you are not going to dry it in the front balcony. You must be aware that these are clauses nowadays which are there. And you are allowed to dry it in the rear balcony. Okay. So I then sell the land to somebody else. Sell the flat to somebody else. And I don't mention that clause in that contract. That somebody else who enters into the property, he dries the laundry in the front balcony as well. So the builder or the other residents, they say that you can't do it. He says that it wasn't mentioned in my contract. But if it is a restriction on the use of that land, which I was bound by, then I could not have sold the property without that restriction. So a covenant running with land is a restriction or any onerous condition which regulates the use of that property. If I don't have a right, I can't sell that right. I can only sell the rights that I have. Got it? So when the land which or the property or a flat which I purchased from X, which was already mortgaged with some institution, if I am going to sell it afresh, then it will always remain subject to that mortgage. Any encumbrance on the title, it continues to run no matter how the title passes. Do you get me? Irrespective of whether it is specifically mentioned in that contract or not. All right? So, ma'am, should we? Yes, please. Yes. जो प्लेन है उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डाले जाते हैं सर, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स डाले जाते हैं जरूरी नहीं कि मटेरियल तो सर अकॉर्डिंग टू ऑर्डर्स रूल के साथ ये कि प्लेन होनी चाहिए या कंसाइज फॉर्म होनी चाहिए Yes. shall contain only Yes. the Material facts. Yes. material facts
Yes, ma'am said that do not put in irrelevant facts. The only material facts must be mentioned. बट जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है वो भी इसमें नहीं दिए मेरे पास नहीं है। तो वो सर एक्स्ट्रा फैक्ट्स मतलब क्या होना चाहिए? जैसे लीगल नोटिस इसमें नहीं लिखा, मैंने उसको लीगल नोटिस दिया, एक जाके बैंक से करना चाहिए और मैंने लिखा ना ये था, लेकिन ये कुछ फैक्ट है। हम तो ये भी डाल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे इन लोगों का एग्रीमेंट करते हैं फॉर एग्जांपल एक न्यूज़पेपर में ये निकला मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पढ़ी ना भैया, हम वो भी ये मसला बदल की का एक पार्ट है, वो डिपेंड करेगा तो आपकी आगे की पूरी केस में आपको फ्रॉड है। is it necessary that there should be a solid reasoning behind the illegal objections, or we can just put them as it is from the No, if you think that those are not made out, then don't put them in. It's not that there is going to be a set of facts that you can put in everywhere. So if in this problem limitation is an issue, so you should put limitation. But if there are facts where limitation is not an issue, then you should not put it in. cause of action is something that we can put in most of the cases. Yes, correct. So yes, you can put that. Yes. Yeah. अगर प्लेन में कुछ ऐसा फैक्ट्स है जो ऑलरेडी कोर्ट में डिसाइड कर रखे हैं इसका केस रिटन स्टेटमेंट में हम केस फैक्ट्स No, no, because as ma'am master pointed out, is yes, plaint contains the facts. Plaint is not supposed to mention the law. Law can be either sourced with to legislation, that is an act. I think she's referring to the claim it is the same party which have already been decided. She's saying that authoritative, some judgment which supports you. G. So, judgments are not to be cited in plaints or in written statements or in rejoinders. Okay, that's just law. Law is not needed to be spelled out. In fact, it is poor drafting. It is considered as poor drafting if you spell it out. Okay. Anything else? So, do we call it a day now? Okay, so then we'll conclude today's session. And then maybe ma'am will continue the next week or all right, thank you, everybody. Thank you, sir. Please. ये तो है। तो होमवर्क ये आपका है कि थोड़ा बहुत आप लोग बनाना, फिर यहाँ डिस्कस करेंगे, उसको और इम्प्रूव करेंगे एंड इन द मीन टाइम send through mail some draft plaints of specific performance as well as written statement. और थोड़ा सा साथ के साथ पढ़ लो, नहीं तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। आपने शुरू में बोला था मैग्नेटाइट को हम आपसे नहीं हम बोलते हैं Okay, I'll tell you. You have to seek pendental IT interest and you have to seek future interest. But you don't quantify it for the purpose of court fee valuation jurisdiction. That is how it is. जैसे अभी जब आपने मनी रिकवरी का केस फाइल किया, मान लो मनी रिकवरी में आपने किसी से 5 लाख लेने हैं, तो वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन भी 5 लाख हो गई। ये 5 लाख तक का केस है तो ये सिविल जज के पास जाएगा या ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, डिपेंडिंग ऑन के 5 लाख की किसके पास लाई करती है। कोर्ट फीस के लिए भी वैल्यू वही है 5 लाख, क्योंकि 5 लाख पे कोर्ट फीस एक्ट पे टेबल बना हुआ है कि आपको इतनी कोर्ट फीस देनी है। लेकिन जब आप इंजंक्शन का सूट फाइल करते हो तो वैल्यू प्रॉपर्टी की मान लो करोड़ों की है, पर फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट फीस हो सकता है फिक्स कोर्ट फीस हो 120 रुपीज की, तो उसमें 2 वैल्यूएशन आ जाएगी। एक वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ जुरिस्डिक्शन मतलब कि ये केस कहाँ फाइल होगा, जुरिस्डिक्शन कहाँ की होगी, और वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट फीस क्या होगा। कोर्ट फीस एक्ट में कुछ एक प्रोविजन है, कुछ एक पर्टिकुलर टेबल है जिसमें लिखा है कि अगर आप इस केस का इस चीज का केस फाइल करते हो तो आपको फिक्स कोर्ट फीस दे देना है। डिक्लेरेशन सिर्फ डिक्लेरेशन का सूट फाइल करते हो तो आपको मान लो 100 रुपए की कोर्ट फीस देनी है।
लेकिन डिक्लेरेशन क्या मांग रहे हो, एक प्रॉपर्टी को लेके जिसकी कीमत जो है वो करोड़ों की है, तो केस तो हाईकोर्ट में फाइल करोगे, लेकिन कोर्ट फीस के लिए वैल्यू उसकी 100 रुपये हो जाएगी। तो उस तरीके से दो वैल्यूज दी जाती है। सब तो कंक्लूजन we were waiting for you to in the meeting. अच्छा I was there. Okay, we'll see you next week. केवल अपनी मार्क करनी है। हो गई इधर सबकी, इधर भी हुई है ना। बहुत स्ट्रेट आता है।